Being a pregnant woman, you definitely feel very scared. मुझे पूरा दिन घर में बंद रहना पड़ता है, ना मैं अपना वॉक कर पा रही हूँ, ना कुछ नहीं, ना कहीं जा पा रही हूँ, ना कहीं आ पा रही हूँ। It is too much of a mental pressure also, emotional pressure. जो प्रिकॉशन है वो मैं लेती रहूंगी मेरे और मेरे बच्चों के लिए। Once the delivery was done and I could see my baby, that was the happiest moment. हाय, मेरा नाम निशा राणे है। मेरी जो ड्यू डेट है वो जुलाई एंडिंग है। Hello everyone, I'm Asha Patel from Mumbai. I delivered on 2nd of May this year and I would like to share my journey on motherhood. It was a very emotional journey because we were married for 7 years and of course there was a little complication in pregnancy. So we had to go through IVF. Once we came to know that we are going to become parents, so obviously that was the most joyful moment for us. As months went by, it was fine, but our due date was May. Since this March onwards, all these things which were started became really very scary. स्टार्टिंग के कुछ मंथ जब लॉकडाउन हुआ था तब काफी डिफिकल्ट था बिकॉज ओपीडी वगैरह सब बंद था और जब हमारा मंथली चेकअप था वो भी पेंडिंग हो रहा था। ओनली वन पेशेंट अलाउड एट वन टाइम। हमें जाते हैं ऊपर तो हमें पूरा सैनिटाइजर करते हैं, टेम्परेचर चेक होता है हमारा, उसके बाद ही हमें डॉक्टर के रूम में विजिट मिलती है। रिसेंटली जो एक केस मिला है जो कोरोना पेशेंट है वो हमारा नियर बाय नेबर में ही है, मेरी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी अभी सील हुई है, जो 14 डेज के लिए हमें कहीं और भी आना ना जाना है। Earlier my plan was to stay near the bridge candy. We were going to shift when I registered at the hospital, but obviously due to the lockdown and everything, we were staying at Borivali at my parents' place. We had to then travel from Borivali to bridge candy. So there also, not everybody was allowed, nor my parents were allowed at the hospital. Only I and my husband had gone alone. मुझे मेरे और मेरे बच्चे के लिए काफ़ी सारा प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड अगर मार्केट जाते हैं, वहाँ से कुछ सब्जी लेके आ रहे हैं तो नहाते हैं, नहाने के बाद जितनी भी सब्जियाँ हम हैं नमक के पानी में बॉईल करके हम उसे बाहर निकाल के सुखाते हैं, फिर सब्जी बनाते हैं। सैनिटाइजर हमने घर के बाहर ही रखा हुआ है, घर पे हमारे किसी का अलाउड नहीं है। Since it's an IVF pregnancy, so obviously you take a lot of care. Every day in the newspaper you keep on reading about the hospitals also. So many nurses or the staff have tested positive in one or the two hospitals. So it was quite fearful time. And whether we will be able to go there and whether I will be able to deliver at the same hospital or do I have to search out for any other hospital because other hospitals or the clinics also won't allow. I did try to search it out which are the other maternity clinics or the hospitals, nearby where in case if we are not allowed, because at that time they had shut the bridge candy also for the new admissions and everything. So I did try to consider a backup option also, but then my doctor assured that there won't be any problem and the maternity ward is on. Then I was little bit relieved. मुझे पूरा दिन घर में बंद रहना पड़ता है, ना मैं अपना वॉक कर पा रही हूँ, ना कुछ नहीं, ना कहीं जा पा रही हूँ, ना कहीं आ पा रही हूँ। ऑफिस का काम, घर का सारा काम, जैसे कि हमारे घर पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड अभी फिलहाल है। मेरे इन-लॉज जो है वो नेटिव में है, जो अभी मुंबई आ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है सब मुझे और मेरे हस्बैंड को मिलकर सॉल्व करनी है, हम दोनों फेस कर रहे हैं। मैं तो बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं बाहर, वहीं से वो कुछ लेके आते हैं जो हमारे महीने भर का सामान जो भी कुछ है। Everything you have to do, your household work and everything, so वो extra burden हो जाता है, extra pressure हो जाता है. Obviously you cannot rest as much as you want. और इस दौरान जो मुझे खाने की इच्छा होती है ना, प्रेगनेंसी कार्विंग्स होती है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो खाना है, जो मुझे अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। अपने हाथ से ही बनाना है, अपने हाथ से ही बना के खाना है। In my family traditions, we cannot pre-buy the baby stuff. So in this lockdown when everything was shut, I was facing a lot of difficulty. Even in the hospital also, at the time of discharge, we are supposed to get the clothes for the baby. I was trying to search out where I can find it. If there is any one shop also open and I can buy stuff for her apart from the diapers or the milk powder or everything else which you get it from the medical as an essential product. Lot of baby stuff you require. How do you get it? मेरे मॉम एंड डैड जो नियर बाय में रहते हैं, इन केस मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देन मेरी मॉम मुझे वहीं से खाना बना के भेजती है डब्बा, तो मेरे मॉम डैड मुझे काफ़ी हेल्प कर देते हैं। I'm currently staying with my parents, my sisters. They are so helpful and supportive. I cannot thank them enough for everything they are doing. जो हमारा रेगुलर फॉलोअप चेकअप में होता है, जैसे कि हमें हर महीने या फिर 2 महीने में एक बार हमें थायराइड का टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है, हमारा शुगर टेस्ट करना है, हमारे विटामिन प्रोटीन जो भी है उसके लिए जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह, वो नॉर्मल चेकिंग हमारे डेली चालू है, जो मैंने रिसेंटली अभी सब करवा लिया है।
COVID test was very mandatory. My test was in Malad, that SRA testing facility. Obviously, you have never ever done this thing, and there also you are very, very scared, being like a lot of patients do come over there. Obviously, the facilities had taken very much care. 15-20 minutes once I reached over there, the testing was done. Before taking the admission also, you have to submit your COVID report. Then only you are admitted into the hospital. And the extra care which we have to take is like only 2 people were allowed, and we were asked to continuously wear the mask even in the hospital. Even when you go out, you have to continuously wear the mask, wear the gloves. बहुत सारे प्लान थे मेरे डिलीवरी को लेके, जैसे मैटरनिटी के लिए काफ़ी सोचा था कि मैटरनिटी शूट होगी, हम वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन में ही मेरा जो अच्छा बेबी शावर था, जो मोस्ट ऑफ 7 मंथ पे होता है प्रेगनेंसी के, वो हमने घर पे ही कर लिया। Since it was a planned delivery, once we reached over there, कुछ वहाँ पे testings किए as per the hospital rules और वो सब. The next day itself was a procedure. During the delivery, since it's a C-section, you are awake only. It's not painful. Within half an hour, 45 minutes, the procedure हो गया था. Once the delivery was done, I could see my baby. That was the happiest moment. All the doctor, the staff, the nurses, they are very, very helpful. Because of the lockdown, obviously, family, friends, वगैरह, they cannot meet. जो आप चाहते थे, especially कि this is a very precious moment and this is you would like to share with everybody, so that gets limited. Once the lockdown opens, definitely I would like to take baby to their grandparents' home to meet them, take their blessings, spend some time with them so they can enjoy, they can play with the baby. पहली चीज आफ्टर लॉकडाउन मैं ये करने वाली हूँ कि मुझे सिजलिंग ब्राउनी खाने की बहुत इच्छा हो रही है, जो मैं लॉकडाउन ओपन होने के बाद पूरा कर लूँगी। तो लॉकडाउन होने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो प्रिकॉशन है, वो मैं लेती रहूँगी मेरे बच्चों के लिए। What I would like to tell her is कि it cannot be described, it's very difficult, but definitely this was a very, very, very difficult time, and it was really like a miracle that in spite of all the obstacles, in spite of all these difficulties, thankfully everything went well. So always just think that you have to be positive no matter what, how grim the situation is, you know. This is what I've learned from this. Even though we did not want to be apart from each other, we had to. I also feel that people in India are very unaware of how serious this is. ये देखिए, ये है मेरा रूम, ये किचन है। हमने कोई सेफ फील नहीं कर रहे हैं आप लोगों के साथ, कुछ भी नहीं।